So we start with circular waveguides. Circular waveguides means a waveguide whose cross section is circular. The axis is along the z direction. The radius and the angle are the coordinates. That means beta 1 and beta 2 will correspond to r and theta here. Beta 1, beta 2 were the general coordinates that we took. So their value will be r and theta respectively here. We start with the TE mode, the transverse electric mode, where the longitudinal electric field will be 0. The longitudinal magnetic field will be obeying the relation as before. The treatment is similar as that of rectangular waveguide, only the value of the coordinates beta 1, beta 2 has changed to r and theta. Here, the cylindrical coordinates, the value of the transverse operator the boundary conditions are here at the boundary r is equal to a. The radius of this circle is a. So as per the method of variable and separable, the solution will be product of two functions. One will be a function of r alone, another will be the function of theta alone. So this is capital sorry. This is sorry, capital theta. So we will multiply this equation by r square and divide by r theta. Equation 1. That is equal to L square. Now we will make one this equation and another will be this one. First, the equation of theta.
This will be a general solution of the simple harmonic equation. Now the second equation for R. Open it. We have multiplied this equation by R and have opened this. Now we will divide this equation by R square. Again dividing this equation by K dash square. Okay. Now we brush our concepts of mathematical physics. What is the Bessel's equation? This is a Bessel's equation, and the solution in terms of Bessel's function at x is equal to 0. Now in circular waveguide, the fields
have a finite value in the center, that is at r is equal to 0. So under that condition, the solution of equation number 4 can be written as this one. Therefore, the solution the assumed solution this is r and theta was here the boundary conditions are at r is equal to a, this is 0. So this will also be 0. The numerator will also be 0. Now we will substitute k dash as this quantity where this SLL dash is the LH solution. Similarly, मैं क्या नोटेशन यूज किया था? देखो, ये इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज हमने r थीटा रख दी. This equation we have used before while we were doing the general treatment. Here, beta 1, beta 2 की वैल्यू, this was the equation. अब यहाँ पे Ez r थीटा की जो अभी वैल्यू इक्वेशन 7 निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसकी वैल्यू अभी खाली हमने इस ऑपरेटर की वैल्यू रखी.
n क्रॉस है, so this will become the theta component, और the theta will become minus r. जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो the products components will change. ये डेल थीटा वाला टर्म ये है, ये वाला टर्म ये, आर का पहले कर लिया, थीटा का टर्म बाद में कर लिया. अब हमको ई परपेंडिकुलर आर थीटा पता है, तो हम इससे ई आर और ई थीटा दोनों निकाल सकते हैं. ई आर विल बी दिस कंपोनेंट और ई थीटा विल बी दिस कंपोनेंट. दोनों कंपोनेंट दिखना है आपको. ई आर विल बी द आर यूनिट वेक्टर आई आर के साथ जो है, और थीटा कंपोनेंट विल बी व्हाट इज विद द यूनिट वेक्टर जे थीटा. तो ये कॉमन. अब इसी तरीके से हमने वहां पे जहां से हमने ये इक्वेशन देखी, वहीं पे एच परपेंडिकुलर आर थीटा की भी इक्वेशन लिखी हुई थी. ये जे पे डिफरेंशियल है, एल तो है एल ही, जो डिफरेंशियल है डैश वहां पे जे पे, यहाँ पे जे पे.
Now the cutoff wavelength, fields निकाल ली. अब cutoff wavelength, now we will go for TM mode. This was TE mode. Now TM mode in circular waveguide. और इक्वेशन जो हमारी थी, दिस इज द वेव इक्वेशन. इस ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे. And the boundary conditions are जैसे पिछले केस में किया था, सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे and you will get the solution which is similar to the previous case. वही सॉल्यूशन हमको यहाँ पे फिर मिल जाएगा. बाउंड्री कंडीशंस, जैसे पिछले केस में किया था, this field will come out to be from the equations. So this is the field
और यहाँ पे इन दिस केस द कट ऑफ वेवलेंथ so this completes your circular waveguide. ये मैंने आज इसलिए कंप्लीट किया है that you will now be having 2 days gap. तो जो भी इसमें आपके concept wise it was the same as we did in rectangular waveguide, only the beta 1 beta 2 were replaced by r and theta. और उनको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन को, एक तो डायरेक्टली सॉल्व हो गई थीटा वाली, आर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज द बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन थोड़ा आप लोगों के लिए